And we are live. वहां पे मॉनिटर है तो मैं इसलिए देख रहा हूँ. I was confused. Which camera should I look at? या पहली बार कर रहे हैं हम ये, so थोड़ा guys just be a little kind to us. Yes. I should have got the Chalchitra Cup. Are we live? Oh, Are we we are. live? Oh, dude, this is good. This is good. Hey, this looks so good. Nice. Yeah. ये तो feel आ गई. Cool. So, चालू करते हैं. How are you, Vaibhav? Welcome to Chalchitra Shit यार, Talks. इसमें तो कॉफी की मलाई भी दिख रही है, रुको. नहीं सॉरी, मतलब थोड़ा मैंने साइड में रख दिया. व्हाट्सअप, क्या हालचाल? Welcome to Chalchitra Talks. वेलकम टू How are Chalchitra you Talks. doing today on this fine Saturday evening? I am just adjusting. I think it'll take some getting used to the setup and Yeah. the idea we are doing this in person. So yeah, Nice. We've come a long way from We have- establishing that yeah. we are just not a Zoom filter to yeah. We have come a long way from establishing that we are just not a Zoom filter. This is good. This is nice. But nice. You just नहीं, मैं थोड़ा cool. कोई बात नहीं guys. आ जाएंगे, होता है. जोन में आ जाएंगे. लाइक स्क्रिप्ट मिल जाएगी तो आ जाएंगे, बता देंगे क्या करना है हमें. या But how is everyone doing? I am doing good. Everyone is doing good. Like someone is asking, कैमरा zoom in, zoom on, zoom out कौन कर रहा है? जैसे जो रोगन के पास जेमी है, हमारे पास भी जेमी है. So hi जेमी. जेमी कभी रिवील नहीं करते खुद को. And जेमी is the one taking care of it. जितनी भी factual चीजें होंगी, जेमी is going to help us with this, help us with all of it. तो हाँ, काफी fun होने वाला है. Yes. Yeah. And what are we going to talk about today? We are going to talk about inner voices. मैं आज एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक लेके आया हूँ. आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको और पास रखो, Okay. है ना? आपकी Yeah. आवाज कम है, जितना पास रख सकते हो रखो. Let's show the production to people. Sameer is commented, Vaani, I ordered my first book today. Hey, nice. Which book did you order, Sameer? आप थोड़ा फैन इंटरेक्शन करना चाहते हो? Yeah. Comment है, feels like it's VNYK. No guys, VNYK तो like अभी एक टाइम पे 5 चीजें करते हो, डॉक्टर मैनहट्टन जैसे, राइट? तो I Yeah. can't reveal much. Yeah. और क्या कमेंट सारे? याशिका इज हियर, अखिल इज हियर. Done. मेरे को इतनी फील आ रही थी ना, लाइक व्हेन आई थॉट ऑफ इट, कि इस सेटअप में व्हेन वील रीड कमेंट्स रियल टाइम, Yeah. लाइक आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट कि जो भी हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स है जिन्हें देखते हैं, जिबिन इज Jibin is हियर, here. शिवांश इज हियर, समीर इज हियर. तो यहाँ तो गाइस सुपर चैट्स वगैरह भी दो यार, इतना खतरनाक सेटअप किया है. बहुत एटलीस्ट मेहनत बजट लगी है कवर हो guys. जाए आज का हमारा. हाँ मतलब आज का देन विल बी गुड. या Yeah. This is nice. Where is everyone joining from? yes, By where is the way, everyone I'm in joining? Jaipur. Vaani This is in setup is in Jaipur. Jaipur. The setup is in Jaipur. Yeah. So हमें बताइए, where are you guys joining from? Yeah, Amir is saying let's go CCT. Amir Sajid is here. Yeah, wide angle भी काफी अच्छा है यार अपना. See, there's the monitor, I but I think थोड़ा can I lag wear आ रहा है उस specs पे. for some time. You can wear Just yours. want to appreciate the frames in Yeah. HD. So Saika Sushi is joining from Chennai. Anchit I think is in Jaipur. Aryan is in Kolkata. Rahul Bulandshahr. Yashika Surat. Mukund Pune. Hey Mukund हमारे गॉडफादर भी बन गए. आयुष, हाय आयुष फ्रॉम बैंगलोर. अखिल हैदराबाद. विस्की वगैरह ले आओ, अमृत कह रहे फील आ जाएगी. अंचित घर से. वाओ, सो स्मार्ट. विश्वम जबलपुर. शिवांश जयपुर. साक्षी गोवा. आर्यन कोलकाता. बॉम्बे, नागपुर. वो बहुत सारे हैं. आई विल गेट टू ऑल ऑफ दीज गाइस. सबसे पहले तो स्ट्रीम लाइक कर दो. वी आर, मेरे को तो 28 ही लाइक दिख रहे हैं. आपको कितने दिख रहे हैं? मुझे 20 लाइक दिख रही है. आपको 20 लाइक दिख रहे हैं गाइस. थोड़ा यार मतलब सेटअप वेटअप इतना बनाया है, एटलीस्ट 100 लाइक्स करो. 49 likes are there at the moment. 100 लाइक्स के This is बाद हम great. टॉपिक पे भी आएंगे. या कैन वी लाइक गाइस, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हाउ कूल दिस इज. ओके, लाइक आई कैन मेक श्योर कि लाइव स्ट्रीम के दौरान कौन सा कैमरा आ रहा है. लेट्स से इफ आई वांट टू हैव वाइड फ्रेम आफ्टर दिस, वाइड फ्रेम. Let's say if I want to again have my frame after this,
My frame. Let's say if I want to have Vaani's frame after this. Vaani's frame. Dude, ये कितना cool है. और जेमी इज तो कूल. जेमी ओपी हो जाएगा. इस जेमी ओपी. देसी जेमी ओपी. सो हमारे जेमी का नाम होगा देसी जेमी. जैसे जो रोगन का पूरा ये मल्टी कैम सेटअप जेमी हैंडल करते थे, हमारे देसी जेबी है. यस. जेपी बोल दिया मैंने. यार मैजिक. वाई सेटअप सो डार्क. हाँ यार, बेसिकली मॉनिटर पे देख रहे थे. अभी तो कलर्स का कुछ हो नहीं सकता आई थिंक, बट आई नो व्हाट कैन बी डन. वी आर नॉट यूजिंग दैट लाइट. नो, let's do it. That light is okay. No, yeah, we're not no. using Like Jamie, देसी Jamie knows what I'm talking about. अभी रियल टाइम हमारा सेटअप और डार्क करते हैं. रुको, अभी देखो Until then, गाइस. do like the stream, guys. Do like the stream. तब तक लाइक करो और हमारा सेटअप बेटर करते हैं. 3 more likes to 100. Nice. हल्का सा लागे झेल लो गाइस, धीरे धीरे बेटर हो जाएंगे इसमें. हो. यस. Nice. अभी So देखो cool. हमारे चेहरे कैसे चमकेंगे. देसी जेमी ओपी. Wait. भाई सबको फील आ गई देसी जेमी की. But guys, do you like in-person streams more, or which हाँ. setup do they like more? It's just यार something अभी I तो don't मतलब हम अपने बेस्ट गेम पे नहीं है ना, तो मतलब धीरे Yeah, but धीरे this is बट still nice. I like this. या लाइक हाँ गाइस, फील आ रही है इसमें. लाइक आपको ये भी मैं बता देता हूँ, हम सेम ही जगह बैठे हैं. लाइक आई कैन ऑल्सो गो इन दिस फ्रेम. देखो ये जैसे वाइड है, वी आर टुगेदर. यहाँ पे वानी बैठी है, सो आई कैन ऑल्सो कम हियर. डूड मैं तो ट्रिप कर रहा हूँ भाई. Oh shit. हमने ये ना पूरा कार्पेंटिंग करके ये सपोर्ट्स बनवाए हैं, सो प्लीज अप्रिशिएट दिस. या काफी मेहनत इन तपती दोपहरी and feels गर्मी. wow, setup मस्त है. या ब्लैक गॉड हियर, दिस इज बेटर. यस यार, सेटअप हमारा काफी सही हो गया. Yeah. अच्छा चलो अब एक सोचते हैं. लाइक माय क्वेश्चन टू एवरीवन, व्हाट शुड वी कॉल देसी जेमी फॉर दोज ऑफ अस जॉइनिंग राइट नाउ. देसी जेमी से फील नहीं आ रही. जो जेमी है, जो हमारा सारा अभी लाइव स्ट्रीम का सेटअप हैंडल कर रहे हैं, व्हाट शुड वी कॉल हिम. एंड नाम सजेस्ट कीजिए, क्या नाम हो सकता है उनका. शगुन आ गया है, पहली सुपर चैट आई है एनएनजी की. शगुन सेटअप देख के मतलब Thanks. एमकेवी की भी फट जाएगी. आई थिंक ही मींस एमकेवीएचडी. एमकेवीएचडी में मेरे को देसी जेमी नहीं दिखाना. वैभव गावड़े कह रहे हैं कि देसी जेमी का नाम. या आई थिंक थोड़ा लैग आ रहा है, लोग कह रहे हैं. तो मे बी वी कैन ऑल्सो टर्न ऑफ द मास्टर फ्रेम और लेट इट बी. जैसे भी है. हाँ. ओ माइक डिस्कनेक्ट हो गया. किसका माइक डिस्कनेक्ट हुआ? हाँ. नो माइक डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था. या आ गया माइक आ गया. बंद ही कर दिया था इन्होंने. अरे डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, लाइक अपन पुल ऑफ कर लेंगे इसमें. Jarvesh. This is nice. Nice. I think you'll have to take lead now. Is your mic lost again? Yeah, no, my Oh, mic no is here. problem. My mic is here. Someone, did you get the comment Jarvesh? You remember? हाँ ले जारवेश रख लो. जारवेश क्या है? Iron Man का. Oh. Now you get it. Yeah, This now is- I get it. Yeah, smart. तो Nice. I think हाँ और बताओ क्या कमेंट्स आए. Okay. Yeah, now your mic is working. It's working finally. लाइट बंद हो गई. Yes. It's okay. Happens. Happens. Guys, Yeah. it's okay. पहली बार है. पहली बार में इतना अच्छा है. Imagine what the second time would look like. हाँ. Jignesh OP. Yeti should sponsor you guys. Yeah. आपका फेस छुप रहा है. It's just because of the mic. Guys, we are doing it for the first time. Please be patient with us. हमारे को प्लीज़ सपोर्ट करो इसमें, क्योंकि हम एनीवे कॉन्शियस है. वीएम स्क्वायर हमने हमेशा जूम कॉल्स पे किया है, सो वी काइंड ऑफ नो हाउ टू गो अबाउट इट. बट लाइक थोड़ा समझ रहे हैं. एक लाइट भी ऑफ हो गई, अभी माइक भी ऑफ हो गया था. अभी तो जोन मैंने अभी तो हमने टॉपिक ही सेलेक्ट नहीं किया जिस बारे में बात करनी है. बट या इट विल कम. एवरीथिंग फिक्स्ड. मैं अब ना फोन उल्टा कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए. अब मैं थोड़ा फोकस करूँगा स्ट्रीम. Cool.
Nice. Yeah, your mic is, but keep it very close to Cool. you. Very. I'll sit Yeah. like this. मैं आज बात करना चाहता हूँ, दिस इज वेयर द स्ट्रीम स्टार्ट्स, इनर वॉइसेस की. सो आई वाज रीडिंग द स्कूल ऑफ लाइफ. उनके ऑथर का नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एलन डे बॉटम. हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? Alan de Botton. I don't know how to pronounce his name. ओके, एलन डे बॉटम. ओके. तो उनकी किताबें, सो उस पर इनर वॉइसेस पे बहुत अच्छा एक पार्ट था वेयर आई रीच्ड एंड आई रियली रियली लाइक्ड इट. मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की थी, सो आई वांट टू टेल अबाउट दैट. सो इनर वॉइसेस का इन्होंने जो एक नया कॉन्सेप्ट बताया कि वो मेरे को बहुत सही लगा कि इनर वॉइसेस आर द वॉइसेस जो एक्चुअली आउटर वॉइसेस होती थी, एंड बिकॉज ऑफ like our conditioning and like our trauma and everything, these inner voices just stayed with us. है ना? तो so there's this line, the origin of inner voice is the origin of the voice of the inner judge is simple to trace. It is an internalization of the voices of people who were once outside us. Right. We absorb the tones of contempt and indifference, of charity and warmth that we will have heard across our formative years. Sometimes the voice is positive and encouraging, other times not. But frequently the inner voice is not very nice at all. It is defeative, panic-ridden, humiliating. It doesn't represent anything like our best insights or most mature capacities. An inner voice was always an outer voice that we have made our own. क्या लगता है आपको इसके बारे में? Do you struggle with inner voices? The ones that we are talking about. All of us हाँ have inner definitely. voices. मतलब not all in of a us have conversations in the shower, in the car, and everywhere else. yeah. Like, how much do you struggle with the critical side of inner voices? I don't know. मतलब I have experienced it too, in the sense कि where it has stopped me from doing things or achieving things at times. बस कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है. कभी कभी the inner voice gets heavy and that needs to be taken care of. But over the years, I think I've gotten better at handling it. But like on the bad days, it is bad. So yeah, matlab, I can like fall for the inner voices very easily. There was also this point that we were discussing abhi, and it was like, ye inner voices aati kahan se? So there's this thing that they are the outside voices which you internalize over a period of time. So as we grow up, and this is what now our friends are getting married and everything. So there are also friends who are planning kids, and this scares me sometimes because people don't realize how much impact caregivers have on you. जो आपके primary caregivers होते हैं, your parents, your nanny, your grandparents, your siblings will have an impact on you. The way they talk to you, you will learn to internalize it. So basically, जो आपकी outer voices हैं, the harshest ones will become your kind of guides as you move along. Which is very, very true. And I just thought of something and I'll need to like disappear for a second, but I think the camera can be on you and I'll just quickly get something. मेरे पास एक आइडिया है, तो आप तब तक ऑडियंस से बात करो, है ना? मैं आता हूँ 2 मिनट में This is आता हूँ. nice. Guys, I'll quickly see the chats for a second, but then I'll move on to something else. Okay. Lighting is dim. Guys, we just had a kind of minor accident on set. Hamari lights band ho gayi, but it's completely okay. But yeah, we were talking about inner voices, and this is kind of a very interesting topic. So Vaibhav has been reading the book The School of Life. I have been getting into the book The School of Life, and it's a beautiful book. Had you subscribed to our email list, so you would have received an email where I recommended the book as well. So there is a particular chapter जो inner voices के बारे में बात करता है. I don't know if you've experienced inner voices, but it's more or less like having a conversation with yourself, the dialogue you have with yourself, but intensified. So let me know in the comments, please, कि how many of you actually go through inner voices? I mean, have inner voices. Oh, wow, we have the light. Yay! मैं लाइट फिक्स करवाने गया था. Yeah. But yeah, I was just asking the people in the comments
कि inner voice I hope happens with everyone, because I was so glad we were talking about this, because I was like, oh, this only happens to me, I am that idiot. But no, it's so nice to know Inner that voices everyone. can also be YouTube comments. Don't you? I'll tell you because Yeah. जब हमने पहला वीडियो बनाया था, and obviously this is going to be an imperfect stream क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं. अभी हमें हमारे लैपटॉप की एक्चुअल कैपेबिलिटीज पता चल रही है, क्या वो 3 कैमरास और ये सब हैंडल कर सकते हैं. तो देयर वाज दिस वन कमेंट टुडे कि लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग तुम ऐसे करो, ये करो, वो करो. बहुत सारे लोग कह रहे हैं. एक बंदे का है जो मैंने बोला था ना कि इंडिया में बहुत लोग ये नहीं करते. सो वन गाय वाज लाइक, हाँ जो रोगन तो एक कप का करके छोड़ चुका है. एंड आई लाइक ब्रो बट हम तो पहली बार कर रहे हैं ना. लाइक फॉर अस from where we started, this is a big deal for us. It So is. inner voices can, like, anything can become, these are the outer voices which eventually become the inner voices, right? कि मान लो उस बंदे ने बोला और मान लो कि ठीक है फिर वानी की कराओ, वापसी की टिकट भेजो, मतलब जूम पे ही करते हैं. बिकॉज दैट वुड बी us not trying to experiment more with this. And कि any comment कि where कि हाँ ये तो हो चुका है, हाँ ये तो हो चुका है. And sometimes they get to you. It's like when we all talk about in the YouTube community hygiene, when bad things get to you. ये सिर्फ भारत में नहीं होता, ये विदेश में भी होता है, सबके साथ होता है. Right. एंड इट्स वेरी वेरी स्केरी डूड. लाइक मेरे को तो बहुत डर लगता है कभी कभी, बिकॉज at your lowest the transition of an outer voice becoming an inner voice is very fast. Can you repeat that? At your lowest, the transition of an outer voice becoming the inner voice is very fast. True. And Yeah. I think you also are very quick to accept it as inner voice. Right. And it becomes and forms your reality. There's a very interesting comment here which kind of disappeared, but somebody was talking कि हम inner voice को confuse कर रहे हैं conscious से. I couldn't read the entire comment. But I would also like to address that, or would you like to address that? How is inner voice different from your conscience, or like what's the difference between the two? Difference between Inner voice and conscience. यार ये मेरे को आपसे जानना है, बिकॉज जब हम इसके बारे में जैम कर रहे थे, यू टोल्ड मी दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स कि Right. पीपल माइट कंफ्यूज इनर वॉइस विद सबकॉन्शियस और कॉन्शियस. तो हाउ आर दे डिफरेंट? मेरे को भी इसका आंसर नहीं पता. Even I am not an expert, but what I आप feel लोगों is को गाइस कमेंट्स में आंसर पता है तो बताओ, Yeah. क्योंकि हमें नहीं पता कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड इनर वॉइस. हम आपको शाउट आउट देके आंसर बताएंगे. या what I feel is like conscience. So you build a conscience over time, which is based on your moral values. ये सही है, ये गलत है, right? How we go about things. Inner voice is the dialogue you have with yourself. Obviously, that's defined by your conscience. आप अपने आप को बताओगे कि oh, I was stealing this. This is wrong. You shouldn't do this, Vaani. Obviously, that comes from my conscience. But then there are certain, you have conversations with yourself at times where you're judging yourself, where you're critiquing yourself, where you're pushing yourself. That's an inner voice, and that is what we're talking about. Okay, so Vaishnavi is saying inner voice has words, I think. Conscience is more like things we believe in. IITN bro is saying conscious is being aware. Inner voice is a thought, just a thought. Interesting. We'll hold that thought and we'll go back to Vaani. I'll be back. Oh, okay. This is nice, guys. So now that we've established the difference between inner voice and conscience, I want to move, and I hope it's clear to everyone. So, yes, we're back. Just trying Agli to. baar se whenever you decide to go, I'm going to properly sing a jingle for an ad. I'm sorry. Just trying to make sure ki things go well, things go go smooth. well. But things are in control, guys. And thank you so much for staying tuned. आपने until now. comment देखा हसरत का? I was saying. Yeah, this is the one I was talking about. Yeah. Hasrat's comment is the one I was talking about. I was saying we maybe confuse inner voice with conscious, and what Vaibhav was talking about is desires. Confused. Inner voice, conscience, desires. When did I talk about desires? Yeah, exactly, Hasrat, sorry. मैंने desire की तो बात ही नहीं की. Yeah. I think it's like it's not there. This is. Was my inner voice still here when I had gone? Yeah. But yes. So, do you have a set difference in your mind now between inner voice and conscious?
मतलब मैं आई एम ओके. I think both of them are very different Yeah. thing. One depends on the other. Inner voice depends on the conscience, but inner voice is just the conversation you have with yourself. Let's go deeper into this. Let's talk about the portrayal. और यहाँ पे मेरे को जितने भी लोग चैट में सबकी हेल्प चाहिए. Let's talk about the portrayal of inner voices in movies slash books or in pop culture. Like You for know what comes instance, to mind? जो हम ऐसे देखते ना कभी कभी एक एंजल और डेविल. yeah. एंजल लेफ्ट में होता है या डेविल? Angel is on the right usually. devil एंजल इज ऑन द राइट. Yeah. बट मेरा ऐसे रिस्पॉन्स है, बट मैं तो लेफ्ट ही हूँ. एंजल इज ऑन द राइट एंड डेविल इज ऑन द लेफ्ट. और वो आपको बोल रहे हैं कि ब्रो को ये करना चाहिए. मतलब मैंने 8-10 साल पहले ये पोर्ट्रेयल देखा था. Yeah. तो इसके अलावा आप लोगों ने क्या क्या You know what पोर्ट्रेयल्स comes to देखे? mind? Remember कसौटी जिंदगी की and Kamalika having a word with herself? Kamalika. नहीं, मेरे को She कमोलिका. used to. So Kamalika was the villain in that TV show. Like it was a Hindi हाँ daily मेरे को पता है, soap. 8:30 बजे आता था. हाँ So she used to have like these proper monologue sessions with herself. हाँ. इन्हें तो मैं दिखाती हूँ and everything else. ये करके इन्हें क्या लगता है कमौलिका पता नहीं. लेकिन this is what comes to mind when I think of internal dialogues, internal monologues. But of course we have much more serious things going on. Like, so angel and devil is one description. Then you also have Tamasha. तमाशा के मिरर सीन्स. Yes. तमाशा के मिरर सीन्स का जो इनर Where he's वॉइस kind पोर्ट्रेल है. of like there's also this phase where you see him talking to himself. He's being very nice, polite to himself. I don't remember the dialogues because I'm not a fan of the movie, so I haven't seen it like that many times in order to be able to remember the dialogues. Yeah. But there are these scenes where he's looking into the mirror and he's very nice to himself in one scene, and the next scene he's like, "Oh, you fool! You don't know anything." And I think that is also a good portrayal of inner monologue voices. Yeah. लोग जैसे अभी कमेंट्स में बता रहे फ्लीबैग में द वे इनर वॉइस हैज बीन डिपिक्टेड. Right. फ्लीबैग इज अ शो जहाँ पे इनर वॉइस पोर्ट्रेयल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. एंड हम लोगों को जब ऐसे होता ना लिफ्ट में, वो खुद को बट नहीं करना, और ऐसे लोग फिर कोई दूर से देख रहा है, वो मतलब वो फिर धीरे धीरे. And then the other was like, what happened to her? So there are different things here. There are inner voices, there are inner monologues, there are inner talks. So जैसे shower talk होती है, जब हम shower thoughts होते हैं. Shower thoughts are basically everything, like जैसे हमें जैसे कोई shower thought आया है, right? तो वो inner voice है या नहीं? I think it's an inner voice. Yeah. But that's a thought. But are you voicing it for yourself? Yeah. You were also telling me this very interesting thing. Sometimes when people get into the territory of self-harm, they also do it because they are not able to contain the inner voices anymore. Is that true? Yeah, I think so. I mean, yeah. Can you give me as examples of things you have read or seen or heard? So I just think like inner voices are a very dangerous territory because who do you trust the most? You trust yourself. You kind of walk every day because you know that your feet are not going to waver, right? Otherwise you would be using a stick. So I think that's where your confidence comes from. And especially jab, you know, everyone walks away or nobody is present, you're left with your inner voices. And if in particular they are not very positive, they're negative, they're constantly harassing you, they're constantly telling you that you're not good enough, you are perhaps stupid, you're ugly, and so on and so forth. It's a very thin line to walk, especially if you do not have the courage to go out and talk to people, talk to your friends. If you don't have friends, you kind of get in the category where you turn to things you might feel will help reduce that stress. You'll probably get addicted to things. You will probably start harming yourself. You'll probably consider, say, ending your life. And I think inner voices play a big role in that. किसी ने चैट में हमें बताया इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेयल्स ऑफ दिस अदरवाइज कि व्हाट आर द अदर थिंग्स. हार्मफुल थॉट्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव थॉट्स. Oh, Vaishnavi Singh. Vaishnavi is from this like profession, no? She's a therapist or a like जित मैं मिला भी हुआ उनसे बॉम्बे में. हाँ तो intrusive thoughts are what happen to people suffering from OCD or paranoia. Supratim, have my eyes tricked me or Vaani was in the Kasoor video?
What is the Kasoor video? What is Kasoor video? Me in moving images saying, I don't know if this is related or not, but Heather's monologue when he went Yes. mad was pretty nice and depicted his confused mental state. Let's talk about such monologues Yeah. Shakespeare ke monologues mostly were like in a voice. yeah. Yeah. Yeah, they were like that, and it's very interesting. I think I haven't seen a lot of movies. Yeah, I can't think of anything, but like books में it's very interesting to note how the monologues go. Yeah. Like somebody said Heather में, so I don't remember Heather में उसने कैसे बोला था, but I remember the monologues I've read of Shakespeare. Yeah. Like all the words the stage and ye wo flana dhimkana, and it's very interesting because you actually see the arc of the character. He's either going to go fly high now or like he's going to die soon, because it's very unique. Yeah. And that actually tells you why inner voices and how inner voices play such a significant role in our mental health. Right. If you learn to befriend / tame your inner voices, I think you can really conquer the world. This is the next topic we'll be moving to, where we'll talk about how to tame the inner voice or how to befriend it. But I'll be back after Vaani A jingle small time. break. After, like Which jingle. one? Which one should I sing? Ding 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 ding. रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा. Washing powder निर्मा. Okay. Do we need another jingle? Yeah. Okay. I'm back. After this short break. देसी जेमी से बात करने गया था मैं कि भाई क्या चल रहा है. या सदगुरु टॉक्स लोग बात कर रहे हैं. सदगुरु इस बारे में बात करते हैं क्या? I don't know. Sadhguru reminds me of this TV show one of my friends has been watching, and she comes back and gives me the summary of the show every day, like what she saw. And it's kind of the best experience I'm having after, like, because I only get the information I need. And like it's fun when the other person tells you, because it's almost like you're getting gup / gossip. Like, oh, it's I think Ashram, but yeah, Bobby Deol wala. Oh yes. कैसा है आश्रम? She's been telling me it's really nice. And My from what parents I also hear, watched it. I think उसका नया season आ रहा है. Guys, Yeah, कैसा है season 3. आश्रम? मैंने तो नहीं देखा, but like what I've heard, it's really nice. I think it's based loosely on a lot of stories. yeah. Bapu, Asaram Bapu, and then Yeah, मेरा best Rahim. like ऐसा viewing experience था Wild Country का, जो produced by जो J Duplass and Mark Duplass है, Duplass brothers है, जो I think ओशो के ऊपर है, मान शीला वगैरह. वो देखा था तो मैं ऐसे हो गया था कि holy shit, ये तो बहुत ही crazy है. Yeah. It's very dark. Yeah. But shall we return to the topic? Yeah, I'm just like trying to also make sure that tech is happening properly. Yeah, there's a lot of pressure. There is a lot of pressure. अगर guys, I think अब lag भी नहीं आ रहा है. Yeah, है ना? Good call ना. What was वापस चालू करें. मैंने उसको जाके ना ऐसे बोला. okay. Yeah. Nice. तो मतलब इतना तो हैंडल कर सकता है हमारा लैपटॉप. हाँ, तो अब जो लोग देख रहे हैं, वापस चालू करते हैं. ये हमारा पार्ट 2 होगा. वापस से हम हमारा इंट्रो लाइक टाइटल दिखाएंगे, बकचोदी करते हैं. ठीक है? अरे क्या मस्के के जैसे चल रहा हूँ मैं, 30-35, ये तो 100 FPS पे चल रहा. राइट. सो ऑन अ काउंट ऑफ 3 लेट्स हैव द इंट्रो एनिमेशन अगेन. हमारे पास इस बार बी राइट बैक एनिमेशन नहीं है, सो लेट्स हैव दैट. 3, 2, 1. We are here only. Our first ever studio podcast, the VM Square Show, and we are back without any lag. और अब हमारा flow भी बन गया. So the 120 people who like decided to stick around, you guys are in for a treat, because अब हम zone में आ चुके हैं, and good stuff is about to like happen. And guys, the humble request, if it's a tech issue that you can deal with, सोच के कि हाँ चलेगा, please don't write about it in the comments. छोटे tech issues मत लिखो, माइक ही बंद हो जाए तो लिख दो, because we try to address every comment and हमारा flow थोड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आपका वॉल्यूम बटन चालू नहीं होता और आप बोलते थे आवाज नहीं आ रही. Yeah, and then we're like, आवाज नहीं आ रही. What? Yeah.
And like Priyam Singh का comment बहुत सही है, powered by Desi Jamie. Yeah. Nice. To the Moon is saying logo is dope. Yeah, उससे भी मैं उसके बारे में मेरे को देसी जिमी से बात करनी है because थोड़ा मोटा है लोगो, मतलब वो V और M, मतलब मेरे को I don't know, like I wish I could mute my mic, our mics, and tell you what I have in mind. yeah, Let me text you over WhatsApp. yeah. But yes. So yeah, this is good. This is good. And just make sure let please guys let us focus यार, मतलब तो वैसे लोग लड़ते हैं ना जो comments में कि ये हो रहा Turn है. your phone here. कर वैसे दूँ भी ना? मेरा phone बंद होने वाला है, so I'll use your phone for comments. Oh yes, you can. Thanks. Feels, love it, understandable. Thank you Vishwam. Awesome intro. Okay. चलो मैं आपको और like points बताता हूँ, ऐसे रख लो, Yeah. है ना. अगर कुछ बहुत ही गंदा है तो बता देना, ठीक है, या बहुत ही अच्छा है. अगर मेरी तारीफ आ रही है तो मेरे को सारे कमेंट्स बता देना, ठीक है. Let's go deeper. Okay. True. Part of improving how we judge our lives involves learning in a conscious, deliberate way to speak to ourselves in a new, different tone, which means exposing ourselves to better voices. So basically हमें हमारी inner voices को not just tame बट ट्रेन करना होता है. दिस राइम्ड कि आपने टेम कर दिया तो मतलब यही है कि आपने मान लिया कि उनका कोई आर्क, कैरेक्टर आर्क नहीं है, बट योर इनर वॉइसेस कैन ऑल्सो हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आर्क. कि मान लो 5 साल पहले जैसे सोचती थी या सोचता था, आई डोंट नो कि हाउ टू लाइक Has that एड्रेस. changed for you? I think that's डेफिनेटली just different inner डेफिनेटली. voices. I have named all my inner. I haven't named them. Sorry. Yeah, Makes your me sound very. 365 Yeah, I personalities. call them me. So sometimes, even while filming vlogs, I go like, so we are going to do this. And I mean me and my 365 different personalities. I'm not implying any disorder at the moment, but it's just like a fun take. But it's just nice. So there are voices that really help you. And they've stayed the way they have been. Like unki, obviously, the clarity of thought has improved there. And clarity of thought has improved for the voices that were very critical of me as well. So I do not know unki character arc different cases. It's just like the same voice, but like it has intensified because clarity of thought aa gayi hai and reasoning better ho gayi hai. थेरेपी कैसी चल रही है आपकी? नहीं मतलब जेन्युइनली पूछो. Therapy is going well. Like yeah. या एंड नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि I don't know, I just feel कि they do evolve, they do like become our friends, but उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कि हम किन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं. अगेन कंजम्पशन वर्सेस क्रिएशन वाली चीज़ होती है कि व्हाट ऑल आर यू कंज्यूमिंग. इनफैक्ट यहाँ पे कंजम्पशन वो भी आ जाता है द पीपल यू हैंग आउट विद, कि वो जो दुनिया की सबसे क्लीशे लाइन है कि यू आर द सम ऑफ completely agree you with are the sum of the 5 people you spend most amount of time with. So But do you think then it's the same inner voice? I like to believe, and I believe there are different inner voices. And चाचा की मम्मी की sometimes एक्स बॉयफ्रेंड की. sometimes I just listen to Chacha ki mummy more than I listen to my mother's inner voice. And it's just like, like you have character. Her inner voice ka ek character, which is like a fun take. I hope nobody calls me questions my So I think about it. sensibilities I after this. think about it in a very different way. मैं अलग अलग नहीं करता. मैं उसको एक कॉम्प्लेक्स क्रीचर के जैसे देखता हूँ कि मान लो इट्स अनदर वैभव मुंजाल, ठीक है, एंड जैसे हम सब कॉम्प्लेक्स है तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स क्रीचर है कि mismatch of like 10-20 different personalities, but मैं उसको, so you look at those as different entities. I like to look at those as same entity. Got it. जिसके अलग मूड स्विंग्स है, जिसकी अलग चीज़ें हैं, कि उसका राइट जैसे हर चीज़ का अलग कोच होता है. जैसे अब लाइक मैं खेलने जाता हूँ तो मेरे टेनिस के कोच अलग हैं, मेंटल कोचेस अलग होते हैं, थेरेपिस्ट आपका काइंड ऑफ अगेन स्पिरिचुअल और मेंटल हाइजीन रिलेटेड कोच हो गए, डाइटिशियन और लाइक मतलब आपके फूडिंग के अलग हो गए. तो हमारी वहाँ पे हर चीज़ की कोचिंग चल रही है जहाँ पे वहाँ पे हमारी लाइफ इंप्रूव हो. सो नाउ थिंक ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर अगेन विच इज़ द एंटिटी विच इज़ लाइक अ कंप्लीट basically a mixture of like 20 different inner voices.
बट वो ये कि मेरे को ट्रेनिंग मतलब उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को देनी है, बट फॉर मी इट्स इजियर टू टेम इफ आई नो कि हाँ This ये is एक ही इंसान है, अभी ये इस तरीके से देख रहा है, ये इस तरीके से देख रहा है. अदरवाइज you are giving it much more power over you if you think it's them and it's them versus you being a single entity. I know it's a single entity, and that is why for me it's because you believe in taming. not taming. I believe in training. Yeah, हाँ. taming and then training. What Yeah. I usually do is I kind of so the voices that kind of push you forward, I try to focus on those. So like even when there is the noise of that inner critique, it should always be there. But like even when it's there, I learn slowly how to mute it out, or like how to not Which is also focus on great, it. dude. Which is also great. And I think you were right when you said कि you know you're the sum of the 5 people that you have around yourself. And I think आज हमने एक सुबह वीडियो भी शूट करी है. Oh, so we shot a video in the morning where हमने इस टेबल पे अराउंड 70-80-90 किताबें रखी जो एवरी बुक दैट आई ओन और And I एटलीस्ट reviewed them. हाँ, और एटलीस्ट दैट द वंस दैट आई हैव एट माय प्लेस, एंड वानी रिव्यूड एवरी बुक. And had you been a patron, you would have already known of it. या अगर आप हमारे ग्लैडिएटर होते या गॉडफादर होते And you would have also received a teaser by now. हाँ, आपको टीजर भी मिल गया होता है क्योंकि उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाता है, सो यू कैन आल्सो बिकम अ पेट्रन. एंड दिस वीडियो विल कम ऑन किताबी कैबिन्स, तो आप उसके बारे में बताइए. Right. एंड लास्ट सेगवे, जस्ट रेज ऑफ हैंड्स. मैं रोज सुबह ना उठने के बाद एक पोल डालता हूँ आजकल यूट्यूब कम्युनिटी में. क्या आप वो पोल्स देख रहे हैं? मेरे को बताना, मेरे को बड़ा मजा आता है. मैं रोज का एक पोल डालता हूँ. Right. जैसे मैं कल जो पोल डालूंगा, मैं अभी सिड वॉरियर है, सिड वॉरियर के साथ मैंने एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया था, एंड आई आस्क्ड हिम दिस कि मैंने उन्हें कहा मैं बहुत वियर्ड पोल्स करना पसंद करता हूँ. सो आई एम इंटरेस्टेड इन वेरी ऐसे ironical things where irony is there. So मैंने उनसे जैसे पूछा कि मैंने 2 साल पहले एक पोल किया था, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है? द पोल इज which is worse for health, no Maggi for breakfast or no breakfast. आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा गंदा क्या है? आप लोग भी कमेंट्स में बताइए. नो मैगी, नहीं सॉरी, which is worse for health, Maggi for breakfast or no breakfast? So हाँ, if I ज्यादा were to go by my therapist, she would Yeah. say no breakfast. no breakfast. Yeah. If I were to go by my So you're instincts, saying no having Maggi for breakfast is more healthy than? Yeah. If I were to go by my instincts, it would be no breakfast. ओके. और चैट में लोगों को क्या लगता है हमें वो भी बताइए. देसी जेमी को क्या लगता है? रेज योर फिंगर. मैगी फॉर ब्रेकफास्ट इज 1 एंड नो ब्रेकफास्ट, नो ब्रेकफास्ट, so he's also no breakfast. Yeah. But you know what, like she told me that breakfast actually helps push the chemicals that make you happy. So it's important you have breakfast. But because I'm such a nice lazy person, I wake up, I have almonds, and I'm like, अगर breakfast नहीं खाया तो my body will get fooled by this. Dude, no. So comments आ रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही है. Maggi for breakfast, Maggi for breakfast, no breakfast, Maggi for breakfast, no breakfast, no breakfast, no breakfast, no breakfast, Maggi for breakfast, Maggi. Yeah. So वाला अच्छा बोला है. 60, 40, 55, 45 को हिंदी में जो भी बोलते हैं वो वाला चल रहा है. Yeah. Nice. I just got a message from Shivansh. Really loved the new setup. Best wishes and kudos to your team. Hey, thank you so much. Where is it? This is so much better than कि there is a 1% lag. Yeah. मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा हमने लैग कैसे खत्म किया वीडियो का. तो या एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं देसी जेमी को अगर ये जॉब रखनी है अगली बार से वो खुद ही आइडिया सोचे. मैं हर बार आके खुसर वुसर नहीं कर सकता, ब्रो ये करके दे. या नो ब्रेकफास्ट इज 0, हैविंग मैगी टेक्स यू इन नेगेटिव. नंदन भाई बहुत सही, बहुत सही. But I think like Maggie, for all the hatred it deserves, it also deserves a chance. यार मैं तो अंडे वाली मैगी खाता हूँ. मतलब पाप कर रहे हो तो अच्छे से करो. मतलब 2 अंडे डाल के अंडे वाली मैगी खाता हूँ. सो इट कॉम्पनसेट्स. जैसे मैं ऑमलेट खाता हूँ तो मैं चीज डाल लेता हूँ. लाइक इट कॉम्पनसेट्स फॉर. That's so nice. या यू वर सेइंग समथिंग. I make Maggie like this. So I have 2 kinds of Maggies. हाँ. One way, I boil the water, then I add the masala, then I also add magic masala ka ek extra packet, and then I absolutely hate it when people break Maggie
I just put it there so that वो noodles बिल्कुल लंबी Oh, so लंबी you're आए. that kind. Oh yeah, I'm that You're, kind of you're person. that kind. Yeah. So that's the first type, and I like my Maggi to not be very like soupy, but also not very dry. Somewhere in the middle, balance is necessary in all aspects of life. The second one, may when I'm feeling like okay, one packet of Maggi won't suffice, but two will be a little too much. So I just add Norca tomato soup in the process. Like after everything is made, like just add Norca soup, and then it's nice. Weird, but okay. It's actually tasty, guys. Try it. Norca soup in okay. Tomato, not the other Hot and sour डाल दिया. one. That sucks. Yeah. गाइज स्ट्रीम जल्दी से लाइक कर दो जो 150 लोग अभी स्ट्रीम देख रहे हैं एंड अगर सेट पे कोई लोग हैं जिनके यूट्यूब पे चलचित्र से लॉग्ड इन हैं तो प्लीज़ एक पोल डाल दीजिए विच इज़ वर्स फॉर योर हेल्थ मैगी फॉर ब्रेकफास्ट और नो ब्रेकफास्ट. सिड वॉरियर ने मेरे को इस पर बहुत अच्छा आंसर दिया था. मैंने एक्चुअली 2 अभी काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए, वन विद सिड वॉरियर एंड वन विद वेदांत रस्टी. तो वेदांत रस्टी के साथ सीन ये हुआ कि उनके साथ जब तक मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया उससे आधे घंटे पहले हमने जस्ट एक आइस ब्रेकिंग सेशन किया, पहली बार बात कर रहे थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. Have you recorded that? नो, क्योंकि कैमरा ऑफ था तो वी डिडंट रिकॉर्ड इट एंड बट काफ़ी अच्छा था. सो आई एम श्योर कि या. सो वैष्णवी सिंह वानी इज एग्जैक्टली लाइक मी. लाइक्स बता दो कितने हुए. 215 लाइक गाइज. लेट्स जल्दी से डू 250 लाइक्स. इतना मेहनत किया हमने सेटअप पे एंड या मैन. आप लोगों को एक फन फैक्ट बताता हूँ. डू वी हैव दैट वाइट स्नोबॉल ऑल्सो समवेयर इन द विसिनिटी? अब आप ब्रेक ले सकते हो. I have actually taken that home. I took my bag home and I kind of emptied it because then it was very. कोई बात नहीं. बट अब पोल आ गया विच इज वर्थ फॉर योर हेल्थ, मैगी फॉर ब्रेकफास्ट और नो ब्रेकफास्ट. I voted as well. सो Why is no breakfast losing? तो मैंने भी नो ब्रेकफास्ट किया. Now it's winning. सो या लेट्स सी. 26 वोट हो गए. Cool. I have heard Sid on PKP. Phone It like. must be real fun. या मजा आया, काफी मजा आया. Dude अब बिल्कुल लैग नहीं आ रहा. विनायक सॉरी देसी जेमी काफी कूल है. Desi Jamie reveal. काफी कूल ना सब. Guys, also F1 के results बता Oh दो. shit, हाँ F1 में क्या चल रहा है? Like P1, P2, P3 किसका है? प्लीज बता दो. Like this is something हम लोग प्रेप कर रहे थे आज, like tech check and everything, so मिस हो गया. Like before the stream, everything was going as planned. I don't know what happened. उसके बाद. Dude यही है यार, इतना प्यारे तरीके से चल रहा है अभी स्ट्रीम. गेम पढ़ा कर दिया सर. शुभांगी सिंह लविंग दिस. या आओ. अगर आप लोग जयपुर में हैं तो प्लीज कम टू द स्टूडियो, ड्रॉप मी एन इंस्टा पे मैसेज. लाइक अभी तो लाइक हम सभी यहाँ पे हैं, सो वी वुड लव टू डू अ जयपुर में काइंड ऑफ गेट टुगेदर. लोगों को बुलाते हैं. Sure, why not? हाँ Let's do that. Were you looking for more excitement? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इसका Oh, yes. Sorry, no. like fair Perez, fair Verstappen. Where is Hamilton? Hamilton was number 11 when I was like before we Hamilton started was number 11. before we started streaming. Okay. Yeah. Anurag is saying this is looking good. Yeah. सही लग रहा है. Yeah. Good going, guys. You have come a long way. Sanket, thank you so much. Do one in Pune. Mukund is saying. Yeah. P1 like यार ये कितनी बोरिंग नहीं हो रहा आप लोगों के लिए? Like See, Perez, Desi Jamie and I are very clear on our. you want like Verstappen to lose. No. We support Charles externally. अंदर से we are screaming for Perez. no Lando Norris. Lando Norris. Yeah. But no, I genuinely want Charles to win. Yeah. I was rooting for him in Monaco as well, but अगर हमारे लाइक टीम से लोग देख रहे हैं तो मेरे को एक बार पोल के रिजल्ट देखना ना. 97 वोट्स मैंने कहा था ना, ये काफी क्लोज होगा. Which is worse for your health? Maggi for breakfast has 99 votes. Maggi for breakfast has 46%. No breakfast 54. So people think having no breakfast is worse for health. Comments? just add almonds, guys. Yeah. Nice. But should we
take a U-turn from the segue and return. नो अब मजा आ रहा है. हाँ, अब मजा आ रहा है. ये हमने जब से वापस इंट्रो किया है, हो गया इनर वॉइसेस. घर जाके पढ़ लेना, मिल जाएगा गूगल पे. तो लैंडो आउट फ्रॉम P2. तो या Correct. oh, just saw this. Aishwarya saying lovely setup. Hey Aishwarya, Nice, she's also Aishwarya is patron. here. Yeah. What do you think are the best podcast setups out there that you like? Also six setup. Like best podcasting setup? I don't remember the name of the show. It was some YouTuber. She had like sofas. Like so you can sit like this with your mic and like just chill and relax on the sofa with your mic. That's it. Yeah, मेरे को सोफा सेटअप मेरे लिए वर्क नहीं करते. मतलब it's a personal call. I want it to be very somber, very boring like the pod. जैसे मेरे को इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड लेक्स फ्रीडमैन से ये पूरा का पूरा सेटअप. एंड कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं in the sense of colors or anything. Oh yeah, that is nice. I just believe like you should be able to move your legs and arms around. जो रोगन इसलिए दारू पिलाता है जब कोई उसके पॉडकास्ट पे आते हैं. और दिस वाज वाटर गाइस. वो तो इलॉन मस्क के साथ तो उसने और चीजें की थी. बट या I just thought of something. Did you choose that site so that you can freely walk around? No, or was your I don't left know. profile better than the right? मैंने देखा था कि मेरी प्रोफाइल बेटर कौन सी है. डू यू वांट टू लाइक स्विच करके देखें? No. एक बार करके देख लेते ना. चलो गाइस, Can I लेट्स also स्विच. take a small break for या what? Oh, I'll get the glass of water there. ओके, हाउ इज दिस फ्रेम गाइस? ये फ्रेम कैसी है? I like this better, dude. Can I just Oh shit, I look bad. can I get the other? Oh yeah, I like this one better, thanks. Oh, this is nice. I have access to the comments as well. Yeah. This reminds me of Joe Rogan. No shit, Sherlock. Oh, that's my camera. Focus camera on both people to see other reaction. And they were okay. Design matters. Podcast is really good setup. Thank you. Who is changing camera angles? Desi Jamie. JP से confuse हो जाता हूँ मैं. Yeah. Super amazing. चलो अब हम बात करते हैं of all the other things. That I hear. Inner voices के बारे में बात करें. और आपका नोशन खोला है? It's on Shit, your- ये क्या देख लिया मैंने आपके लैपटॉप में? You want me to come back to my seat? Oh shit. Seriously? Inner voices, source, my thoughts. You can go नीचे and there'll be like a VM offline. आपने ये सब inverted में क्या लिखा हुआ है? You are stupid, you are ugly, you are not good. I was just giving exampmples of inner आप voices. किए ना वैसे? You are stupid, you are ugly, you are not good enough. You are was just- better off on your own. Yeah. I was reading about inner voices up examples and I was like, so this is how it could be different from say your subconscious. तो मेरी सिंपल इनर वॉइस है कि नहा लो, मतलब दोस्त को फोन कर लो. So your inner voice is your mother? नहीं मतलब हाँ, तो वो एक पार्ट है कि नहा लो. Yeah. मतलब मेक श्योर कि लैग ना है स्ट्रीम में. या Can we come back? अंचित आ गया. अंचित भाई यही था वो बंदा. FYI जो अगर ये करके छोड़ चुका है. वो छोड़ा नहीं Yeah, है he said बेटे. the same thing. He said the same thing here also. हाँ And then नीचे Vishwam has called him out. काफी toxic, lol. हाँ. नहीं वो इनर वॉइसेस को कॉल आउट करने दो यार. अंचित लाइक उनको कभी कभी मौका मिलता है. 160 people are here. 257 लाइक्स. जल्दी से 275 लाइक्स कर दो. वानी की ब्राउजिंग हिस्ट्री दिखाओ. ओके Just got a notification on your MacBook. हाँ. Oh shit. कैलेंडर. Look how the turntables. Oh shit. This is nice. This is nice. Yeah. Boom. Boom. Just 10 seconds passed by, but loving the vibe. Thanks, Mayank. Inner Voices is a glimpse of reality about to happen in a while from now. Oh, fuck. This is interesting. Girish is saying, Inner Voice is a glimpse of the reality about to happen in a while from now. Is it? No. No. पहले Unless and until your inner voice actually can predict the future. Is an astrologer. अंचित भाई मजाक कर रहे थे. थैंक्स अंचित. हाँ ब्रो, आज हम ना थोड़े वल्नरेबल है. हमारी इनर वॉइसेस ये कर रही है Inner क्योंकि voices peak पर है आज हमारी इनर वॉइसेस पीक पे है. मतलब सेट पे लोग हैं, हम ऐसे शो कर रहे हैं पहली बार.
एंड अभी चिकन भी आने वाला है, हम लोग आज सारे चिकन पे फीस्ट करेंगे. देसी जेमी ने कहा कि सेट इतना अच्छा है, लेट मी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. Yes. सो या He's sponsoring our dinner as well for a job well done. But yes, do you have the book of the month with you right now? No, I'll sit here. We are not playing musical chairs. no, I think I dropped it home. I'll have to check my bag because I dropped half of the things home because my bag was very heavy. Come on, man. और क्या Do you have the book for the month? मतलब मेरे पास Kindle में लेनी है, मतलब So most of the books that we reviewed of Vaibhav today, yeah. Vaibhav has a lovely collection of books, by the way. Yeah, I have. Yes. मैं मतलब वानी ने कहा कि मैं रिव्यू करूँ, मैंने कहा कर ले बेटे, मतलब It's just like हर बुक शानदार है. 70% of them are 70% of the good books though are a book a month books. So One of the advantages of sitting here is you don't get to see the monitor, so you focus more. and for me it's good. I can't see, so I can't focus anyway. Because आपके पास चश्मा नहीं है. Yeah. तो आप यहीं आ जाओ ना. या विश्वा में सिंह उनकी डिलीवर नहीं हो रही है. Oh, why? चिकन रिव्यू भी करना था, ठीक है. वो पोल का क्या हुआ? पोल अभी भी है क्या या चला गया? I think चला गया. ओके. सब चले गए. आज मैंने सुबह पोल किया था, किसी ने बताया कि आर यू गाइस वाचिंग द पोल्स दैट आई एम डूइंग एवरी मॉर्निंग. मैं उठता है ना, आई एम लाइक कि यार ऐसे कुछ चल रहा होता है दिमाग में, मैं पोल डाल देता हूँ. कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा देखते हो? बेटर म्यूजिक किसका? इंसेप्शन. बेटर साउंड ट्रैक किसका? इंसेप्शन, डार्क नाइट या इंटरस्टेलर? तो मेरा Which वोट one did you like? इंसेप्शन. तो उसको लोएस्ट वोट्स मिले. एवरीवन इज लाइक इफ इंटरस्टेलर इज देयर, लाइक फर्क ही नहीं पड़ता. आई एम लाइक ब्रो, बट तुमने इंसेप्शन का टाइम सुना है क्या? Right. या I think we started watching an episode of Succession today because of the music. Oh yes. We ended up watching the entire episode. The entire second half of the episode. Yeah. We were watching season 1 episode 7 जहाँ पे family therapy. We don't endorse banging tables. Yeah. So any of the kids watching. मुकुंद का comment आया, वानी वैभव का spot वापस से था. Audience bro. Audience decides. Yeah, I don't mind. Just to me, Yeah. this is nice. And that was so. It was as if I asked for that spot. It was Vaibhav who came here, Mukund. Yes. I'm just getting a message कि कोई transaction हुआ है. Oh, chicken order हुआ है. Yes. Do you ever get conscious when you tell people you're a non-vegetarian? नहीं. Do you get conscious? It's a Sometimes I very good do. topic, by the way. It's a very Sometimes I do because like when we're streaming and I have to talk about being a non-vegetarian, I sometimes wonder if it's just one step away from cancellation. It's interesting. It's a very interesting topic क्योंकि मैं तो नहीं बन सकता vegan. मेरे को तो नहीं लगता मेरे It's बस about का. vegetarian, not vegan, but हाँ, I don't really understand. नहीं, बट ये बहुत सही टॉपिक है बिकॉज पीपल डू गेट कॉन्शियस कि जब उन्हें बताना होता है, नॉट बिकॉज ऑफ कि घरों के कल्चर क्या है, जैसा माहौल है हर चीज़ के लिए जज किया जाता है. सो टेलिंग समवन कि भाई आप मांस मच्छी खाते हो तो इट कैन लाइक बैकफायर. सो बट वही है कि you can be unapologetic about it, but like should you be unapologetic about it? And I do not know if it's valid for everyone, but the moment I become apologetic about something, I start becoming conscious of doing that thing. So I think the whole facade of trying to become vegetarian was because I was kind of a little like, why are you smiling? नहीं, अभी मुकुंद की सुपर चैट आई है, उसने लिखा फॉर कोक, और सक्सेशन का एक डायलॉग है, केंडल ग्रेग को बोलता है यू वांट मी टू डू पाक कोक, बट देन उसने लिखा है कोका कोला. सॉरी. Yeah, but yeah, that's mostly. Then I think the whole there was this moment. कहाँ से आई ये कॉज क्या है इसका, जब पहली बार आप कॉन्शियस हुए अपने मांसाहारी या शाकाहारी होने के उसको? I kind of quit chicken when I was in class 3 because my grandfather had passed away and I thought he will reincarnate as a chicken. So I decided to not have chicken. But then I realized I'm a fool and I shouldn't believe in such things. But then I think I got really conscious because a lot of my friends suddenly were vegetarian people.
vegetarian folks, and they'd be like, chicken. I don't know how you eat it. Like, I don't know, yeah, tasty hota hai. So that's it. And now, I've realized I don't think I can ever become a vegetarian. If there comes a day, well and good, but otherwise. But it's just something like, because there are so many. Have you seen Petaka? If that's the correct pronunciation, right? PET है ना? Yeah. हाँ. Unka Instagram handle. Very gory stuff. It's sad. It's नहीं मतलब borderline. जैसे The kind of your ex-boyfriend who you want to leave behind, but he's just constantly there. Yeah. Is it like कि जैसे वो tobacco kills के जैसे आते हैं? It's much worse. They post images of people, they post images of animals going through cruelty, and they're like, you're doing this to them. And I'm just like, hey, no, I didn't do anything. Let me eat my butter chicken. Yeah, it's bad. But then, you know what? Do you want us to cancel the Swiggy order? मतलब No. वो मूली के पराठे पड़े लौकी भी पड़ी है. But yeah. मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ. Yes. भाई जो रोगन वाला सिगार मंगाओ, फील आ जाएगा. We'll copy one thing at a time, okay? Yeah. Tuko is saying anything related to the body is a thing too shallow to associate to the conscience. Oh, like our team has put up this very interesting poll. Rate our new podcast setup 9.4 या 9.5. Hey, nice. 9.5. I want to eat non-veg on हाँ मेरे लिए यहाँ पे आता है कि Tuesday को I don't believe in this thing. हाँ नहीं मैं तो खाता हूँ. So I don't understand. ये Tuesday Thursday वाला सीन क्या होता है? अच्छा Thursday का भी होता है? Thursday का भी होता है. जो लोग चैट में हमें बताएंगे क्या अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप Tuesday and Thursday. You can't even cut your hair on Tuesday and Thursday. So my family fortunately is very nice. ऐसे regards में nobody really cares because nobody really knows. But then there are people like, how can you eat chicken on this day? You're getting your hair cut on Thursday. For the longest time, they made me believe that I had the worst haircut of my life because I went to the hairdresser on Tuesday. And I was like, क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने मंगलवार को बाल कटवाए? Oh shit. But no, I'm just kidding. That was a joke. But yeah, you can't. You can't wear new things on Saturday. Yeah. On that note, I'll be back with another ad, and yes, Vaani is going to talk in the chat. That was nice. But yes, vegans. Okay. Sorry, I'm late. Hi, Shreyank. What's up? And I am slowly trying to. But yes, I do not blame vegans for judging non-vegetarian. Cool. Thursday and Saturday we can't eat non-veg here in Gujarat. Monday. So can anyone tell me what is the reason behind the days? Like I know, I'm not sure. Thursday तो सही में नहीं खा सकते. Why? Why सच में? Can't cut hair on Saturday. See, everyone has different days. Gujarat में you can't eat non-veg on Monday, Thursday and Saturday. You can't cut hair on Tuesday. You can't cut hair on Saturday also. क्या Saturday को भी बाल नहीं काट सकते? But like उससे याद आया, I think you should take a break now because we are on to something. Sorry, ये बहुत ही forced like a break था. हम कुछ like change करने की कोशिश कर रहे हैं. And oh yes, थोड़ा सा हम टेक के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं साथ साथ. कैन आई डू इट फ्रॉम माय हैंड ओनली? दिखाना. Superstitions. थोड़ा सा और करें. क्या ये इसलिए बिकॉज मैंने ट्यूसडे को एग्स खाए थे? नाइस वन. देखना सामने देखना. नहीं हम आपकी फ्रेम बेटर कर रहे हैं. ठीक है बाद में कर लेंगे. बट हाँ दिस इज फॉर द ट्यूसडे का जो. और क्या बोलते हैं अगर करते हो तो मैंने अगर मान लो ट्यूसडे को चिकन खा लिया तो आपकी फ्रेम कभी ठीक नहीं होती.
यही दिक्कत है, यही दिक्कत है, हमारी लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी. But यही हुआ है. I really have given up on this. या मेरा बड़ा मन हो रहा है आपकी फ्रेम बेटर करने का. मैं मेरे बस दिमाग कुछ में एक जिंगल चल रही है. कोई कुछ तोड़ ना दूं. टिंग 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 टिंग. ये लेट मी नो जब ज्यादा हो रहा है. हाँ Okay. Hi. Okay. ठीक है सर. I think it But like, probably so- started with cleansing. Yeah. It started with Cleansing your body in terms of diet. This is what my father also tells me. Like, so you can't eat. So it was just introduced so that people would take necessary breaks. But because not everyone was educated, so they just used like Tuesday को नहीं खाना, पाप चढ़ेगा. माता रानी पाप चढ़ाएगी. got it. I should just कि मैं और मेरा बड़ा मुंह अब चुप हो जाएंगे. नहीं बोलो तब तक फ्रेम सेट हो जाए. But Yeah. yes. इंटरनेट यूजर इज आस्किंग वेयर इज द थर्ड कैमरा, कैन एनीवन टेल. वो स्टार्टिंग में था, आपको उसके लिए फ्रेम रिवाइंड करनी पड़ेगी. हम थर्ड कैमरा वापस नहीं दिखाना But you चाहते. can see my acne clearly. ओके. मंगलवार हनुमान जी के नाम पे नो नॉनवेज. Why? ओके. Hanuman ji was yeah. या Sorry. नहीं, हाँ कर नहीं सकते. एंड या बड़े ऐसे होते हैं. ये सब क्या है? अब थोड़ा ये होता है ना, आफ्टर 4 पैक जब बात होती है, ये इनर टॉक्स है. ये क्या है? Yeah. दिस इज I इनर just टॉक. yeah. I was reading an article a few days ago, and it was actually Harvard Business Review ने publish किया था about how so there's this thing called the I can't remember the word, but retention होता है ना employees का. So companies are struggling with retaining Gen Zs and late millennials, like 1990s के बाद वाले बच्चे, because and it had everything to do with flexibility. आप कितनी flexibility दे रहे हो अपने employees को who are in that particular period. And I think same goes for rituals. People initially moved from certain religions, I'll refrain from naming them, into others because they wanted flexibility in terms of rituals, in terms of kitna paisa ja raha hai, in terms of kitne, everything's happening. Right. And I think this is what human beings look for everywhere. It's just we've forgotten over time the convenience of and the reason behind having religion. And I will refrain from further statements now. नहीं, बट काफी इंटरेस्टिंग. पता नहीं, मैं तो वही है कि इफ आई एम एट होम, अगर लाइक सबके साथ हूँ तो नहीं खाऊंगा, बट अदरवाइज जब मैं बॉम्बे रहता था ये ऐसे, तो कभी सोचा ही नहीं द ट्यूसडे वाला थिंग, नॉनवेज वाला. Yeah, same. या अगर लाइक बहुत ही ऐसे हो कि ओके, इफ यू हैव टू बी लाइक ओवरटली लाइक इफ पीपल आर अराउंड एंड तो ठीक है, बट हाँ, बट लाइक आई डोंट नो, आई नेवर गॉट इट. इनर टॉक्स मैन, सब बता रहा हूँ, इनर टॉक्स. That brings me to the topic of, मैंने एक लाइन लिखी थी जब हम ना इस टॉपिक के बारे में सोच रहे थे, और वानी भी ऐसे हो गई थी कि क्या ऐसा होता है. सो गाइस, टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ इट. ऐसी कुछ लिखा था, व्हेन यू आर हाई यू टेंड टू मेक द इनर टॉक बिकम द आउटर टॉक एंड वाइस वर्सा. तो बेसिकली मेरे को लगता है कि जब आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सब्सटेंस या अल्कोहल होते हो, तो जो ट्रांजिशनरी फेज होता है ऑफ लाइक द इनर टॉक एंड आउटर टॉक, वो बहुत फास्ट होता है. राइट, कि ब्रो गाड़ी तेरा भाई ही चलाएगा वाला जो जोन होता है ना, मान लो कि आपको अंदर से वैसी फीलिंग आ रही हो, वो बहुत फास्ट होता है. बिकॉज outer talks become inner talks and inner talks become outer talks. This is something I believe in, कि ट्रांजिशन बहुत फास्ट हो जाता है. अदरवाइज मान लो कि आपने बहुत खुद को बोला नहीं मैं ये करूँगा नहीं करूँगा, उसके अंडर लाइक यू जस्ट लाइक डू इट. या वाह वाह इर्शा, थैंक्स. Yeah. I do not know if I should have an opinion, if I should voice an opinion. I don't drink. I don't know any of these things. Oh, so you're that kind. Okay. Yeah. भाई इनर आत्मा बाहर आ जाती है, वॉइस तो छोड़ ही दो. कमेंट ऑफ द डे, आदि, टेक द मनी, यू विन. Okay. When you are high, conspiracy theories start making sense to the moon thing.
To the moon is such a nice name. Inner voice, outer voice, कोई third voice भी ऐसे आ जाती होगी. Yeah. Yeah. Third personality. Gitanjali saying, when I'm high, there are no talks, just hunger. Girish is asking, is inner talk our subconscious mind or am I wrong? ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे. Conscious और subconscious, are they the same thing? I think they're different. How are they different? Google करे बिना. I think conscious is mostly like, hey, you've established an idea of what your morals will be like. Subconscious is when your conscious isn't active, but like background में चल रही हैं चीजें फिर भी. And then you have inner monologues, which are just there. And I think subconscious and conscious kind of govern your inner monologues. Sorry, but you're smiling and that's making me very conscious because I don't know why you're smiling. Sorry, So like, what is it that I don't know and Jamie knows and you know? And I'm like, मुझे भी बताओ. हाँ. नहीं, हमने actually स्विगी ऑर्डर कैंसिल कर दिया था. Really? यार, no chicken No, for you. I'm sorry. आज डे क्या है? Who cares? शनिवार को नहीं खाते ब्रो. डूड कमेंट किया था Really? वो. Cancelled the order. इंटरनेट यूजर ने या अचित ने किसी ने कमेंट किया था सैटरडे को यू कांट ईट चिकन और एल्स यू विल हैव टू वेट अंटिल मिडनाइट, फिर आप खा सकते हो. तो हमने सोचा किया. when you Questioning my friendship with you right now. when you are high, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है पता चल जाता है. मात्र सिंह. This is very politically incorrect. Yeah. Your consciousness takes reference from your subconscious, Mukund is saying. Time to flip the comments for a while. आज के लिए ज़्यादा हो गया. Okay. But हम रैप भी कर सकते हैं यार. Like I think we did a good first attempt of like podcasting live in real time with 3 cams. And यार पहले थोड़े से glitches थे, issues थे, अभी better हो गया. Yeah. It's a never ending journey. We'll keep getting better and keep supporting us. बताओ और कैसे better कर सकते हैं. And but हाँ, we really worked on it dude. Like पीछे ये जो लगाए हैं काफ़ी interesting story है इसकी. Vinayak was right when he said like, oh sorry, देसी जेमी या कि हमें time lapse बनाना चाहिए था इसके लिए. But we'll end with an advertisement. Let me quickly check the status of the chicken and उस हिसाब से end करते हैं, क्योंकि मैं तो जैसे ही end हो तो we need to. So we तो still आप तो haven't- anyway नहीं खा रहे तो but like there is achar also. Which one? Mixed pickle वो like वो आप Is like it like घर का बना हुआ? हाँ आप मूली के पराठों के साथ खाओ. I wasn't the one who did not want to eat chicken on Saturday. क्या status है? 25 minutes. So we can stream for 20 more minutes. Then we'll stream. We got turmeric, nahi cosmetic. We got turmeric Ayurvedic cream. मेरे पर्सनल बिलीफ के अकॉर्डिंग नहीं, बट किसी को खाना है तो. रैंडम इंटरनेट यूजर की हेल्थ एडवाइस से अपने फूड ऑर्डर्स डिसाइड हो रहे हैं. या तो This is live vlogging. लाइव व्लॉगिंग. या थर्ड कैम तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, या करता है? नहीं करता. द थर्ड कैम डाइड. Turmeric, nahi दिस इज इट यार. बट लाइक मजा आया. Yes. और कोई Guys, by the way, Tamasha or Kartik calling Kartik? तमाशा और कार्तिक. एवरीवन विल चूज तमाशा. एवरीवन विल But चूज. Kartik calling Kartik has nice songs now. Oh, which has better Yeah. songs. The question should be which has better songs. This is a good question. Which has better songs? Kartik calling Kartik or Tamasha? For me, it's Kartik calling Kartik. Uff, ये तेरी अदा वाला गाना है उसमें. I can see Desi Jamie's head moving Yeah, in sync with mine. yeah. And you would have seen that, guys, अगर आप हमारे godfathers होते. हाँ, गॉड तो यही बैठे हैं सारे. Hey. We're hosting a special screening for them. Yeah. इसको भी पोल के जैसे डाल दीजिए गाइस कि विच फिल्म हैज बेटर सॉन्ग्स. कार्तिक कॉलिंग कार्तिक और तमाशा. तमाशा किसी के I तमाशा. also like Tamasha के कुछ songs like हीर तो बड़ी sad है. आई
I hate I like a every. few songs of Tamasha. Yeah. I like Safarnama. And I also like, I like Safarnama and I like Heer To Badi Sad Hai. I can't remember any other songs from the movie, so perhaps. Hey, yeah, ये भी एक गाना है Oh मुकुंद yeah, मेरे this was I remember this was the first movie that had the English, that had even the English part of the song, right? Right. Otherwise, it used to be very it used to be a cringe fest, Yeah. for lack of a better word. Yeah. मेरे को आप Oh, तू तो कोई अभी और हम है, is also बाकी nice. देर जितना टाइम बचा है हम आपकी फ्रेम ठीक करें. Sure. Can Let's I do it. still keep on blabbering? या तो मैं आपकी फ्रेम But I can also be quiet if you would want me to be, and mysterious. Yes, Kartik calling Kartik. My vote goes for. Nobody is leading right now. Ha 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 ha. Somebody. अच्छा वो वायर्स अटकी हुई है सो Vinayak, people can hear you laughing. But this is nice. 140 नहीं people are एक still लेवल से watching. ज्यादा भी ठीक हो ही नहीं Guys, do सकती. like the stream, and yeah, this is absolutely wonderful. Matar Gashti bro. Oh yeah. एक लेवल से ज्यादा भी आपकी. कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you. वैसे जूम पे नहीं हो रहा वैसे. हाँ. Hey Sumit, sexy setup, much love. Thanks Hey, Sumit. Sumit. Yeah. मुझको तो नहीं मैं क्या कह रहा था? मिल गई जिंदगी या सो का अभी बहुत सारी वायर्स हैं यहाँ पे सो एक लेवल से ज्यादा पंगे नहीं ले सकते. True. तो we'll have to do with whatever we have right now. But this is really good. मजा आया, काफी मजा आया. और हमने सारे लिंक्स इन द कमेंट्स डिस्क्रिप्शन डाले हुए हैं about like the set things involved in the setup. जो लिस्ट हमें अपडेट करनी है बट या नंदन मेंबर फॉर 13 months, गुड स्ट्रीम, लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर. नाइस, दिस इज रियली नाइस. एक तो ऐसे में पढ़ते हुए चैट पढ़ते हुए बहुत फील आती है, राइट? जैसे आप रियल टाइम पॉडकास्टिंग कर रहे हो और आप चैट्स पढ़ रहे हो, सोचो उनको भी कितना मजा आ रहा होगा. मतलब मेरे को तो बहुत मजा आएगा कि कोई ऐसे प्रॉपर सेटअप में बैठ के आपको शाउट आउट दे रहा है. क्योंकि जब जूम पे होते हैं तो इट्स स्टिल स्लाइटली Right. 2D-ish. Like if I Would may, you say we are more focused when we're doing it on Zoom? obviously, but like it will take some getting used to क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है. मैं तो आज like I'll rate my like focus के मामले में performance 2/10 because I was like ये कर लो वो कर लो ये कर लो, but I just believe कि again we'll get better at it. जैसे कल भी पूरे दिन शूट करना है तो हम प्री रिकॉर्डेड करेंगे कल जो चीज़ है, so I think we will get better at it. True. Yeah. We absolutely will. Yeah. And anything else that you want to discuss? Book for the month of June. Book for the month of June. Which Yeah. I kind of left at home. because Yeah, I'm वो आपको लानी चाहिए absolutely थी. brilliant. Yeah. But it's okay. We can like completely wrap it also. So thank you for joining, guys. This was really, really good. Thanks for the patience here, especially the people who stayed till the end. Just like reveal yourselves कि आपने start से end तक अगर पूरा का पूरा stream देखा, बड़ा अच्छा लगा. Again, like I said, sorry for all the tech glitches which were there, but we are getting better at this. We'll kill this. जो रोगन की दुकान बंद कराने के लिए आ चुके हैं हम. और कोई बोलेगा हाँ वो तो दुकान कब की बंद कर चुका है. Nice. Like कोई बात नहीं, हम बची बचाई दुकान भी बंद हम करवा बची देंगे. बचाई दुकानें हम बंद कर जमीन देंगे. के कागज भी साइन करवा के जाएंगे. हाँ फिर मेरे को याद आ गया घोसला कागज किसको दिखा रहे हो. वो जब वो फेक पेपर जलाता था ना, कागज किसको दिखा रहे हो. Yeah. But this has been lovely, guys. Vishwam is saying loved it throughout. DG thanks man. Rituparan gay. Internet user, great effort guys. Interesting. Me in the moving image focused podcasters are not necessarily good podcasters. Kafi. Yeah. Girish is saying my inner voice says your channel will rock in days to come. I thought you were... हाँ मतलब मैं कंफ्यूज हो गया कि yeah. Yeah. जो रोगन को भूल जाओ, VM स्क्वायर जिंदाबाद. दिव्यज सिंह प्यार के कागज पे. भाई ये कैसी ऑडियंस आ रही है. अरे यार ये पता नहीं कुछ तो स्पैमर्स हैं. हाँ इसको बैन करते हैं, रुको. अच्छा हाँ कर दिया टीम ने कर दिया.
मैं अनहाइड करने वाला था क्योंकि someone had already hidden it. Loved it दोस्तों. Jatin is saying I'm so happy to see CCT getting better by the day. I'll be there Wow. for all VM Square streams. Nice. That's so Imagine nice. फिर हम 5-6 कुछ महीनों बाद रियल टाइम कर रहे हो सकते हैं जहाँ पे ऑडियंस आए. And the next guest is जैसे देसी जेमी, ऐसे हमारे वो पहले How गाने will बजे थे. how will people do like live chat then? लाइव चैट Will अंडे that फेंक be के. called heckling? नो, अंडे फेंक के लाइव चैट करेंगे. Yeah. और तेरे को सुपर चैट चाहिए, ये ले सुपर In चैट. पुराने ज़माने में they used to throw coins on the screen, no? Yeah. I don't know if you are हाँ, aware वो of the सुपर concept. चैट. Yeah. Why is this show called VM Square? Vaibhav वानी Munjal, why महेश, do you think so? वैभव मुंजाल. Yeah, so VM Square. By 50-50 poll. Oh, Kartik calling Kartik after 98 votes, 50%. कौन है? Polls तो बहुत अच्छे करते हैं हम लोग. Very nice, very nice. फिर तो टाउन हॉल होगा विश्व सिंह. लाइव स्ट्रीम में स्पैम होता है, आप मॉड्स को रखने पड़ेंगे. एंड या बट लाइक कोई अंडे फेंक रहा होगा तो तब कौन मॉडरेटर होंगे. We'll have umbrellas and Yeah. our reflex actions. गाइस डू सब्सक्राइब टू किताबी कैबिन्स ऑल्सो. बहुत शानदार वीडियो आने वाला है, हम लिंक इन डिस्क्रिप्शन डालने वाले हैं उसका. और किताबी कैबिन्स लिखोगे तो सबसे पहले आ जाएगा. लेट्स प्लीज हेल्प अस रीच 5000 सब्सक्राइबर्स ऑन किताबी कैबिन्स. मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ अभी. चैट में कोई भी अगर लिंक डाल सकता है किताबी कैबिन्स का तो प्लीज पिन कर दो. अभी करवाते हैं सबसे. किताबी कैबिन्स हमने एक बुक्स के लिए एक्सक्लूसिवली चैनल चालू किया है. वी हैव 3796 सब्सक्राइबर्स देयर. तो आपको 1204 और सब्सक्राइबर देने हैं हमें, और वी विल हैव 5000 सब्सक्राइबर्स. 3796 4 people unsubscribed from today. हाँ है ये लोग. या क्या बिगाड़ा था हमने आपका? But okay. किताबी कैबिन्स पे ज़्यादा वीडियोस डालो. यस अभी बड़े प्लान्स हैं. Hey. Kamaljeet is saying I'm not able to upgrade my membership, having some error. Kamaljeet Singh ji, can you send me an email on vaibhav@chalchitratalks.com? My team will help you. Because अगर आप YouTube के थ्रू नहीं कर पा रहे तो UPI, chalchitratalks.com, patreon.com, बहुत अलग तरीके भी हैं to become a member. या किताबी कैबिन्स का आ गया है लिंक. Why Vaibhav has stopped giving this month's recommendation? Yeah, because we were working on bigger things. So just basically, yeah. I subscribed the day it started. Nice. Cool. Hey, But this 10 लोगों ने कर लिया अभी. Hey, that's so nice, guys. Yeah. Yay. मैंने एक 3 बॉडी प्रॉब्लम पे वीडियो बनाया अभी. विनायक अगेन लाइक वो बहुत ऐसे फील के साथ बनाया था मैंने एक गो में. बहुत टाइम से मैं बात करना चाहता था 3 बॉडी के बारे में. एंड विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स आई मेड अ वीडियो ऑन इट. बहुत ज़्यादा फील आई बिकॉज Nice. आज भी मैं उसके कुछ पेजेस पढ़ रहा था. आई डोंट थिंक एनी piece of art has affected me the way 3 body Nice. has. And by when I say 3 body I mean the following parts also. Mhm. Basically Dark Forest and its end. Nice. Hey, Kshitij is here. Hey, Long thank you time so no much see. for the super chat, Kshitij. So good to see this production live. Kshitij Hey. भाई हमेशा लाइक जब भी हम कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे होते हैं he gives us a great super Yeah. chat. He's always there. One of the most consistent godfathers in regard to super chats, and it's always nice to hear from him. Thank you so much, Kshitij, and hope you guys reach 100k soon. Yeah. Thanks, Siddharth. Guys, the trolley problem वाली ethics game भी खेलना. यार विनायक नहीं बोलो देसी जेमी. The OG should have some secret now. Sorry, Divij. Yeah. Arey, I'm going to order the second book now. Yes, Vishwam, please do Nice. so. And I'm currently reading 3 Body Problem Walkthrough Me saying. nice. मजा Nice. है यार. I'm very happy we did this. And let's end the stream now. This was a lot of fun. Thank you so much for joining. Thank you for all the patience. Thank you for all the love. This is just the beginning. There's another super chat.
site don't have payment option in dollars. Sir, you can also try from patreon.com. patreon.com का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा. आप एक ईमेल डाल दीजिए vaibhav@chalchitratalks.com पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ. We'll help you. And I'm currently reading 3 Body Problem. So yeah man, लोग जाने ही नहीं दे रहे. But yeah, again for one last time, thank you so much. This is just the beginning. We have big plans. हमारा next week भी एक बहुत interesting shoot है. I'm not sure if Disha will allow us to reveal it right now, but it's very interesting. Yeah, कुछ बड़ा shoot है. And some people that you like on the channel, like they are up to something very big. And yeah, by the way, there is a channel called Complex that even does video called Sneaker shopping. इस सेटअप पे लोगों को बुलाना है ब्रो. मेरे को तो लोगों को पहले दिल्ली वालों को बुलाते हैं. दिल्ली में जितने गेस्ट रहते हैं ना, जयपुर nice. कि आओ यहाँ पे रहो, चिकन खिलाएंगे आपको और पूरा सेटअप करेंगे. या Delhi is nice. Okay. अरे यार नहीं 15 मिनट. चलो तब तक अपन लोग ऐसे चिल कर लेंगे, गाने वाने सुन लेंगे. ठीक है. चलो guys, we'll see you and let's wrap this. Do we have an ending slate? We don't. तो हम स्टार्टिंग वाला वापस दिखा देंगे जिससे वीडियो स्टार्ट हुआ था. On a count of 5, 4, 3, 2, 1. Bye guys. Bye everyone. Bye guys. Bye. We'll see you soon. Bye. And this was the